Hello students. Today we will discuss about nutrient cycle. Nutrient cycling, we have to discuss two cycle in major. One is nitrogen cycle, another one is sulfur cycle. So let's discuss about nutrient cycling first. So as you know that every element is used by a living organism passes between the biotic and abiotic components of the biosphere. जो भी एलिमेंट यूज़ हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो एक बायोटिक लिविंग या नॉन लिविंग ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो भी बायोस्फीयर में प्रेजेंट है उसमें उसके बीच से पास होता है। तो जब ये पास होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में तो ये जो पाथवे फॉर्म होता है केमिकल एलिमेंट्स का एक जो पाथवे बनता है उसी को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं। तो ये जो साइकिल है बायोजियोकेमिकल साइकिल ये कैटेगराइज है दो पार्ट्स में। दिस साइकिल फॉल इनटू टू कैटेगरीज एंड वन इज़ gaseous nutrient cycle, another one is sedimentary cycle. So gaseous nutrient cycle is nothing but when all the gases mean in geochemical cycle जब atmosphere इन मेजर एलिमेंट जब एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में तो जितनी भी गैसेस होती हैं उस साइकिल जो साइकिल के थ्रू पास होती हैं और जो एक पाथवे फॉर्म करती हैं उन वो कैटेगराइज होती हैं गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में और वो बहुत ही थोड़ा या परमानेंट चेंज दिखाती हैं अपने अबंडेंस में अपने डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसमें मेजॉरिटी में कौन कौन आते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन। और सेडिमेंट्री साइकिल की हम बात करें तो ये ऐसी इसमें एलिमेंट्स आते हैं जो कि डायरेक्टली जो मेजर रिजर्वायर है इसका वो लिथोस्फेयर है और मेनली वीदरिंग क्या होता है जब भी ये एक ऐसा प्रोसेस है जब मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का किस वजह से बाय द एक्शन ऑफ लाइक रेन स्नो कोल्ड एक्सेट्रा कोई भी आप ले सकते हो। तो ये सारे फंक्शन के थ्रू जब ब्रेक डाउन हो रहा है रॉक का उसको वीदरिंग कहते हैं। तो इसमें जो मेजॉरिटी में एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है फॉस्फोरस सल्फर आयोडीन एंड मोस्ट ऑफ द अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। सो you have understand about the nutrient cycle. Now discuss about now we will discuss about the nitrogen cycle which is on your syllabus. So what is nitrogen cycle? As you know very well that nitrogen is the major component present in the atmosphere. How much it is present in atmosphere? I think you know, everyone know about this. It is 78.09% present in the atmosphere, right? So it should be used in various forms in the atmosphere. So there are some steps which are taken in the by the atmosphere so that we can take that nitrogen in a positive way because it is present in a that form which is not be absorbed by the atmosphere. So these are the 5 steps which are involved in the nitrogen cycle. One is the nitrogen fixation, second one is the ammonification, third is nitrification, fourth is assimilation, and fifth is denitrification. Now what is nitrogen fixation? It is when the nitrogen is getting fixed in order to be used by plant its atmospheric form. And what is used in this nitrogen fixation process? Agitobacter. It's a very brief given in this page. We will discuss this further about the detailed study. It's a flow chart of nitrogen cycle. As you can see that from nitrogen, this is nitrogen and it's getting the first step is the nitrogen fixation. It's the bacterial fixation of air by Rhizobium, Agitobacter, Clostridium, Aspergillus species. These all are the bacterial species which are fixing nitrogen in air. Now the plant protein taking it, and when these plant facing death, when the plant facing death, then death of the plant gives the dead organic matter, right?
And now this dead organic matter undergoes nitrogen mineralization, decomposition and oxidation of cellulose by cellulomonas bacteria and chitin eating actinomycetes, as well as lignin eating fungus. So these are all the bacterial, fungal and actinomycetes bacterial species which are undergoing mineralization of nitrogen. This is the second step. Now it's forming ammonia, and when there is a formation of ammonia, now there is a process, ammonification takes place, and which is doing the process is undergoes by nitrosomonas bacteria, bacterial oxidation by nitrosomonas bacteria. And now there is a process of nitrification. In nitrification, ammonia is in this bacterial oxidation of nitrosomonas bacteria, ammonia is getting converted into nitrite. You can see ammonia is converting into nitrite, NO2 minus, and now nitrite is getting converted into nitrate, which is done by nitrobacter. The first step is ammonia is getting converted into nitrite, right, which is done by nitrosomonas, and nitrite is getting converted into nitrate, which is done by nitrobacter. So these two things you have to take in mind, that nitrosomonas and nitrobacter is different bacteria and they are doing different functions. So now there is a formation of nitrite. Now what is to be done? Nitrogen uptake. Now the process of nitrogen uptake will be there. There is a consumption of organic fertilizer by plant, and so after that plant protein absorb it, and this is the whole chain of nitrogen cycle. So just go through this cycle. A brief, I have given all the steps in brief, that firstly, the first step of nitrogen cycle is nitrogen fixation. What is it? It is a process by which molecular nitrogen which is in the air is getting converted into ammonia or related nitrogenous compounds in soil. So it's nothing but क्या हो रहा है इसमें, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में या फिर रिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड में सॉइल में. और ये किसके थ्रू हो रहा है, क्या इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज़ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यू कैन सी the soil microorganism is participating in it, and they are named as Azotobacter and Archaea. These all are the bacteria which are participating in nitrogen fixation. It's very useful. It's very useful in the biosynthesis of all nitrogen containing organic compound, such as amino acid, protein, nucleoside, triphosphate and nucleic acid. It is also essential for agriculture and the manufacture of fertilizers. These are the applications and useful things for the fixation of nitrogen. Now all biological nitrogen fixation is effected by enzymes called nitrogenases. The enzymes which are participating in biological nitrogen fixation are nitrogenases. So these are the enzyme. Now talk about the second step of nitrogen cycle. It is ammonification. What is ammonification? It is when a plant or animal die or an animal एक्सपेल्स वेस्ट. जो इनिशियल फॉर्म नाइट्रोजन का बनता है वो है ऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्रोजन का. तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में और विद इन द रिमेन्स बैक इनटू अमोनियम. और यही जो प्रोसेस है इसको अमोनिफिकेशन बोला जाता है या मिनरलाइजेशन बोला जाता है, जिसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया और फंजाई कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को बैक इनटू अमोनियम NH4+. तो इसको अमोनिफिकेशन बोला जा रहा है. इसमें कौन कौन से इंजाइम इन्वॉल्व हैं? इसमें जो मेजॉरिटी में 3 इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज़ GS, जिसको बोलते हैं ग्लूटामीन सिंथेसिस. ग्लूटामीन सिंथेसिस. ग्लूटामीन क्यों है? जब GLN लिखते हैं दैट इज़ ग्लूटामीन.
That is a difference between glutamine and it's not coming, it's not writing good. Glutamine, GLN is glutamine and GLU is glutamate. Glutamine, I'm denoting it with the neon color, and glutamate I am denoting with yellow color. Okay, so one is GS, glutamine synthetase, and GO-gate is glutamate to oxoglutarate aminotransferase. And the third enzyme participating is glutamate dehydrogenase. Ammonium assimilation minor role it takes place and important in amino acid catabolism. अमोनियम के एसिमिलेशन में इसका माइनर रोल है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज जेनेज का, और अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब आते हैं हम थर्ड स्टेप में नाइट्रोजन साइकिल के, दैट इज़ नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनियम जो बन गया है अब वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, जो कि किसके थ्रू हो रहा है, कौन परफॉर्म कर रहे हैं, सॉइल लिविंग बैक्टीरिया और अदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. अगर इसकी हम प्राइमरी स्टेज की बात करें नाइट्रिफिकेशन की, तो इसमें अमोनियम का ऑक्सीडेशन होता है. अमोनियम का फॉर्मूला है NH4+, जो कि परफॉर्म कर रहा है बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फ्लो डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल दैट नाइट्रोसोमोनास इज परफॉर्मिंग the oxidation of ammonium and converting ammonia into nitrites, NO2 minus, and nitrobacter is responsible for the oxidation of nitrite to nitrate. So this is the major step of nitrification, and it is important for the ammonia to be converted to nitrate and nitrite because ammonia gas is toxic to plant. So nitrification is an important step. Now the fourth step is assimilation. Plant can absorb nitrate or ammonium from the soil by their root hairs. If nitrate is absorbed and it is first reduced to nitrite ion and then ammonium ion for incorporation into amino acid. These are all nitrate and nitrite we have taken. So now the formation of nitrate and nitrite and assimilation. Now we have to assimilate that the particular product we have get. So assimilation of nitrate and nitrite is the process we have to discuss in assimilation. It is first reduced to nitrite ion and then ammonium ion for incorporation into amino acid, nucleic acid and chlorophyll. प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबिया के साथ, और राइजोबियम जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स का काम करते हैं, और कुछ नाइट्रोजन जो होते हैं वो एसिमिलेट हो जाते हैं किस फॉर्म में, अमोनियम आयंस के फॉर्म में, डायरेक्टली फ्रॉम द नोड्यूल्स. रूट नोड्यूल्स जो होते हैं उनके थ्रू डायरेक्टली फॉर्म करते हैं, एसिमिलेट होते हैं. और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स साइक्लिंग है अमीनो एसिड्स की राइजोबिया बैक्टीरियोइड्स जो होते हैं और प्लांट के बीच में. इसमें बहुत सी नोड जीन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, वो डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है. अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो. नॉड A, नॉड B, नॉड C जीन्स होती हैं, नॉड D भी होता है. और कैसे ये पूरी साइकिल है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे हमें नहीं देखना है. आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे साइकिल चल रही है. प्लांट जो है वो अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है बैक्टीरियोइड्स को, जिसकी वजह से अमोनिया का एसिमिलेशन होता है. सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड द बैक्टीरियोइड्स पास अमीनो एसिड बैक टू द प्लांट, और जो कि एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तभी ये प्रोसेस एसिमिलेशन का हो पाता है. नाउ द लास्ट स्टेप इज़ डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो भी नाइट्रेट बना है उसका अब रिडक्शन होगा बैक इनटू नाइट्रोजन गैस, कंप्लीटिंग द नाइट्रोजन साइकिल. अब जो भी नाइट्रेट लास्टली फॉर्म हुआ था कब,
नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट के बाद जो नाइट्रेट बना था थ्रू द नाइट्रोबैक्टर एंजाइम, वो अब फिर से नाइट्रोजन गैस में फॉर्म करेगा, दैट इज़ नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। क्योंकि नाइट्रिफिकेशन का उल्टा हो रहा है, मतलब रिवर्स हो रहा है सॉरी, तो वो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और यही फिर कंप्लीट करता है नाइट्रोजन साइकिल को। ये कौन परफॉर्म कर रहा है? बैक्टीरियल स्पीशीज़ जिसका नाम है सीडोमोनास और पैराकॉकस। किस कंडीशन में? एनारोबिक कंडीशन में। और नाइट्रेट को ये यूज़ करता है कैसे? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू, और ऑक्सीजन इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह पे रेस्पिरेशन के टाइम पे, मतलब नाइट्रेट एज अ ऑक्सीजन की जगह पे काम कर रहा है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि एरोबिक कंडीशन में भी जी लेता है, इट कैन लीव। सो ये पूरा का पूरा एक नाइट्रोजन साइकिल का ओवरव्यू था। यू कैन रीड इट and understand it, and if you have any problem in any of the line on any of the topic, you can just text me on WhatsApp as well as on Google Classroom. Thank you.